Hello everyone, welcome back to Tech Six Sense, and congratulations to all the students who have got the confirmations mail from Deloitte. And today we will discuss about the Cyber Gurukul Bootcamp. So all the details definitely we will discuss. And again, if you find so this type of confirmations mail we have already received, like interview result as well as the next steps. So what are the things we have to do after getting the result? So this type of mail, I believe, all the students is already received. So in our colleges, so the deadline is 10th December 2025 before 12 p.m. We have to complete all the procedure. So definitely we will talk about that. And if you have any query, definitely you can go through the frequently asked questions. So that particular questions also we have discussed, and how you can accept the LOI. So there are some process are also available. So उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले डेफिनेटली वो जो गुरुकुल वाला तुम्हारा ट्रेनिंग है बेसिकली बूट कैंप है तो बूट कैंप में क्या होता है नहीं होता है किस हिसाब से तुमको क्लियर करना चाहिए क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है कहाँ पढ़ाया जाता है सो ईच एंड एवरीथिंग डेफिनेटली वी विल डिस्कस. So now this is the consent form, like the how you can fill the LOI. So definitely you will get a one mail from your registered mail ID. So there are two options are available. Basically the ready button. Are you accept this particular offer or not? So definitely you have to click on the agree ready button. Then just if you click on the next, so immediately you have to fill your entire details. So one of our students already uh, get this particular offer. So all the details you have to fill. So make sure you enter your name based on your Aadhaar card and the registered mail ID you have normally used, your contact number, and definitely you have to mention are you willing to accept this LOI or not. So definitely you have to select the yes, and whatever the terms and conditions are available, you have to select the yes. And so finally you will get a successful mail from Deloitte. Now, if I talk about the bootcamp, so bootcamp is basically conducted in Skill Development Institute and Bhubaneswar. So it's completely physical mode training program. So the training program you can say the duration of the training program is basically 6 months, which will be start from mid of January 2026, and it will be definitely completed by June 2026. So after that, definitely you will get a final job offer. And what are the topic they will cover? So mainly on cyber security. So you can say it's a from basic to advanced, all the topic basic to advanced. So all the topic will be covered, and course is basically discussed by your trained faculty at Bhubaneswar SDI. So this is the basic course curriculum, and the mode is as I mentioned. So ये तुम्हारा fully residential है. So तुम घर से नहीं कर सकते हो, अब ऑनलाइन में नहीं कर सकते हो, तुमको प्रेजेंट रहना चाहिए वो बेसिकली उसका सेंटर में. और ये जो तुम्हारा 6 मंथ का ट्रेनिंग है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम हो सकता है, तुम्हारा लैब एग्जाम हो सकता है, तो उसी टाइम तुमको सिर्फ ब्रेक मिल सकता है. वो ब्रेक का प्रोसेस क्या है, तुम्हारा जब सेमेस्टर एग्जाम का रूटीन पब्लिश हो जाएगा, वो रूटीन तुम्हारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट से डेलॉयट को मेल करने वाले, तो उसके बाद तुम्हारे पास एक मेल आएगा कि तुम्हारी इस तारीख से तुम्हारा एग्जाम है, so definitely you will get a leave or the break for 10 days or 12 days. So it's totally depends on your schedule, basically the semester exam schedule. And now come back to the few questions, like normally the students wants to know during this particular training program, so do you get any stipend? Definitely no, there are no such payment is available, but yes, after completing the training program, you will get a 4.5 LPA. So it basically depends on college to college, but on an average 4.25 to 4.50. So this is the normal package. तो कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं तुमको ना, फूड और एकोमोडेशन, जहां पर तुमको रहना है खाना है, तो बेसिकली ऑल द थिंग्स दे विल प्रोवाइडेड, एज वेल एज द कोर्स फी. जो तुम्हारा भुवनेश्वर का जो एसडीए बेसिकली स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, उसका जो भी कोर्सेज फी है तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी का, वो पूरा कोर्स फीस और तुम्हारा रहने का खाने का टोटली तुम्हारा डेलॉयट प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन जो तुम्हारा जर्नी वाला जो पार्ट है बेसिकली, तो वो बेसिकली तुमको खुद को पेमेंट करना होगा. लेकिन जो लोकेशन में तुम रह रहे हो और जो तुम्हारा सेंटर है एसडीआई का, तो ये दोनों बीच का जो तुम्हारा ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो तुमको एज ए स्टूडेंट तुमको कैरी करना चाहिए, वो तुम्हारा डेलॉयट नहीं रिइंबर्समेंट करने वाले. अच्छा, तुम्हारे जो एग्जाम पैटर्न है, तो हर वीक में तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा और कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा. एमसीक्यू बेस्ड तुम्हारा क्वेश्चंस रहेगा हर वीक में, वो नॉर्मली इजी बोल सकते हो. अगर तुम सीरियसली वो वाला ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये तुमको इजी लगेगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, और जो तुम्हारा टॉपिक कवर होगा उसके ऊपर में तुमको कुछ छोटा छोटा कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, वो तुमको सबमिट करना होगा. ये सब मार्क्स मिला के तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा. अगर तुम क्लियर कर पा रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गुड टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर रोल.
और उसके साथ साथ क्या देने वाले हैं वो लोग, जो एक्सेस ऑफ लर्निंग पोर्टल, उसका खुद का लर्निंग पोर्टल होगा, उसका तुम्हारा एक्सेस देगा जहां से तुम पढ़ाई कर सकते हो, जो नोट है, पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड इन ए पीडीएफ फॉर्मेट और द पीपीटी फॉर्मेट. So after completing all this particular training program, and definitely, so definitely you will get a mail that from this particular time frame you can join on this particular role. The role is basically cyber security analyst. So this is the fixed role. Yes, we are happy to say that one of our student already selected for this particular role. So you can find this is the picture. So we take the permission from her. Like this is the certification you will get, and this is the type of student. All the students are already completing this type of training program. So it's very easy and simple. So yes, if you need any further clarifications, or if you need any podcast with our students, so definitely in the comment section you just mention need podcast. So definitely we will make a podcast with our students, and we are definitely extremely happy that they have shared all the information. Whatever the information I am sharing right now, it's basically valid. Okay, so this is all about the training program. Now, if you need a further, if you have any query, so definitely you can ask in our WhatsApp group or in the comment section. So definitely we'll reply each and every query. And again, still, if you have any further queries, so you can also meet our team. So definitely they will guide you how whatever the questions you have in your mind. And that's it. And thank you. All the best.